topic, which is our most favorite topic. Okay, and then we will have a concluding remarks. क्या है वो टॉपिक? डायरेक्ट टैक्सेस. सबकी एक ही एक्सपेक्टेशन है कि मेरे डायरेक्ट टैक्सेस के रेट्स कभी कम होने वाले हैं, होने हुए हैं या नहीं. Unfortunately, though no tickerings in the slab rates were done, but there are some important amendments. We are covering only important amendments. Reason being, there are certain amendments in appeals, penalties, which may not have right now, because of time constraint, we cannot cover all the amendments, but major amendments. What are the major amendments? TDS जो deduct होता है, everyone knows TDS जब भी deduct होता है, when I sell or purchase the property, TDS deducted is a 1%. ओरिजिनल प्रोविजन क्या थी कि मैं प्रॉपर्टी सेल करता हूं, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू इज 67 lakhs एंड माय कंसीडरेशन पेड इज 65 lakhs. हम टीडीएस कितना काटते थे? 65,000, 1%. इज इट करेक्ट? यस, थम्स अप. नेक्स्ट, अभी प्रपोज अमेंडमेंट उन्होंने क्या की है कि मेरा अगर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 67 lakhs है और कंसीडरेशन मुबदला जाला मुंडे 65 lakhs है, तो भी मुझे कितना काटना चाहिए? 67,000. That is higher of the two. That is stamp duty pay 67,000. We have to deduct TDS. That everyone has to make note of. Nowadays, nobody is entering. In few cases where ready reckoner rates are more than the actual consideration, by compulsion they may be entering into the transaction. But otherwise, 99% of the transaction, their consideration value is always higher than the stamp duty value. But here, wherever stamp duty value is more, तो TDS कितना आएगा? 67,000. Okay, next. Yeah, this is a very interesting topic, cryptocurrency. Now, cryptocurrency, they were always saying that, what is it? Is it a currency? Looking at it, it's a currency. But whether it's an asset, okay, just for a fun factor, we will have a poll again, okay. Just to understand what is the understanding of it. I'm launching a poll, 20 seconds, not more than that. That is the last poll. So we will not have that much trouble afterwards, scratching our head. Okay. क्रिप्टो के बारे में सब पोल पार्टिसिपेट कर रहे हैं. So even if we are not dealing in the crypto, we are interested in crypto. बिकॉज वोलेटिलिटी है. 30,000 का 45,000 जाता है, एक दिन में 15,000 कमा लेते हैं, लेकिन वो 15,000 नीचे भी जाता है. ओके, यस 5 4 3 in the pool. I'll share the results. Yes. Asset 56%. 17% of the attendees are saying that it's a currency and 27% of not other. Yet 27% wale hai na, they are blessed people. That is a lifetime tone. But frankly, why I'm saying so, yeah, not yet government has totally brought any regulation for bringing them into the ambit. अभी तो उन्होंने tax declare किया, okay. उन्होंने अभी तक tax declare किया. तो अभी क्या टैक्स डिक्लेयर किया है हम लोग देख लेते हैं. ओके, विल क्विकली रिव्यू दिस. टैक्सेबल 30% ऑन एनी इनकम फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ वीडीए. वीडीए मतलब दे आर सेइंग इट एज अ वर्चुअल डिजिटल असेट. वर्चुअल डिजिटल असेट, उसमें एनएफटी, इट इज अ नॉन इंटरचेंजेबल यूनिट ऑफ डेटा स्टोर ऑन अ ब्लॉकचेन, अ फॉर्म ऑफ डिजिटल लेजर दैट कैन बी सोल्ड और ट्रेडेड or any other digital asset notified by the government. So, nowhere, I think budget speech, they are referred to the crypto as such, but this falls into this particular definition. So, अगर मैंने क्रिप्टो का 30,000 में लिया और 45,000 में बेचा है, तो 15,000 पे 30% भरना है. Okay. Whether any deduction in respect of expenditure except cost of acquisition of asset. मतलब अगर मैं बिजनेस कर रहा हूं ना, तो मुझे ट्रेडिंग बिजनेस में इंसिडेंटल कॉस्ट भी अलाउ होती है.
तो यहाँ क्रिप्टो करेंसी आपने 100 में ली है और 80 में बेची है तो 20 रुपए पे टैक्स आएगा, एडिशनल एक्सपेंडिचर आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा, सिंपल। वेदर लॉस ऑफ ऑन ट्रांसफर बीडीए कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट एनी अदर इनकम, नो। अगर क्रिप्टो में आपको लॉस हुआ है तो आप ऐसा नहीं बोल सकते मेरे बिजनेस से एडजस्ट करो, नहीं होगा। वेदर लॉस कैन बी कैरी फॉरवर्ड, नो। Now, who are dealing, they are the market leaders of the crypto or the stakeholders. They are a bit apprehensive of these provisions, but they are also happy that at least government somewhere down the line they have taxed it, and there is an indirect recognition. But regulating the cryptocurrency, they will bring detailed rules, regulations in future. Okay. TDS applicability होगा 1%, जैसे हम लोग करते हैं वहां भी TDS applicability होगा। जैसे आपने आपको एक शायद सेक्शन मालूम रहेगा कि रिलेटिव को आपने कुछ पैसा दिया और वो पैसा 50,000 तक, रिलेटिव के 50,000 के ऊपर है तो उसके ऊपर टैक्स नहीं है। लेकिन आपके दोस्त ने आपको सपोज 1 लाख रुपए दिया तो उसके ऊपर आपको टैक्स आता है, वो 56 सेक्शन में इनकम फ्रॉम अदर। सिमिलरली अगर आप किसी को क्रिप्टो गिफ्ट करते हो तो ऑब्वियसली इफ इट एक्सीड्स 50,000 इट विल बी टैक्स्ड। तो क्लैरिफिकेशन यहाँ, एक तो जीएसटी का क्या होगा ये वर्चुअल डिजिटल एसेट के बारे में, दैट वी हैव टू सी। एंड नेक्स्ट वन इज नोटिफिकेशन, जैसे हम लोगों ने बोले एट प्रेजेंट वीडियोस आर नॉट ट्रीटेड एट पार विद इंडियन करेंसी, सो हूएवर टोल्ड दैट इट इज नॉट अ करेंसी, इट इज दे आर बैंक्ड। Now we'll move on to the updated income tax return. Okay. When I saw this, heard that provision in the budget speech, I was very happy. It's a very good provision. Indeed, it's a good provision. Due dates क्या है हमारे? चलो हम लोग वो देख लेते हैं। 22-23 के ड्यू डेट्स क्या है? 31 मार्च 22 का ड्यू डेट क्या है? 31 जुलाई, 31 दिसंबर, 31 दिसंबर। बिलेटेड का, ओरिजिनल का 31 जुलाई है, 31 अक्टूबर है, 30 नवंबर है। If salaried, business और ट्रांसफर प्राइसिंग। सिमिलरली 22-23 के लिए ये दिया है एज एप्लीकेबल। नेक्स्ट वन इज अगर बिलेटेड रहेगा तो क्या है, वो भी दिया है। रिवाइज हुआ तो भी दिया। अभी अपडेटेड रिटर्न कैन बी फाइल्ड विद इन 2 years फ्रॉम द एंड ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर। एंड ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर, अगर 22-23 का असेसमेंट ईयर मार्च 23 को खत्म हो रहा है तो टू माई माइंड इट कम्स टू मार्च 25, तब तक मैं कर सकता हूँ। इट्स वेरी गुड। इंटेंट क्या है, देखो एवरी प्रोविजन there is a memorandum to that particular with a finance bill. If you have interest, you should read the memorandum why they are taxed it. The intent क्या है मालूम है, that taxpayer to file a correct statement of his income as against limited time given at present, reduce the litigation within the duration specified under the income tax act. तो क्या है कि अगर मैं for some aberration, for some oversight, I happen to under-report my income, then वो litigation से जहां से अच्छा आप पैसा भर दो, so far so good. तो ओरिजिनल रिटर्न आप कर सकते हो क्या? अपडेटेड यस, रिवाइज यस, बिलेटेड यस। ओके, नाउ देयर आर सर्टेन की क्वेश्चंस। इफ अपडेटेड रिटर्न इज अ लॉस, रिटर्न ऑफ लॉस, नो। अगर आप लॉस डिक्लेयर करना चाहते हो तो आप नहीं कर सकते। अगर ओरिजिनल रिटर्न में आपकी टैक्स लायबिलिटी 5 लाख है, अपडेटेड रिटर्न में आप 3 लाख कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। रिफंड इंक्रीज कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। रिजल्टिंग इनटू रिफंड नहीं कर सकते। सर्च सर्वे इनिशिएट किया है, नहीं कर सकते। अपडेटेड रिटर्न इज ऑलरेडी फाइल्ड वंस, नो। इफ स्क्रूटिनी असेसमेंट, दिस वाज माय दिस थॉट crept in my mind when I have not read the provision. The scrutiny assessment और prosecution अगर चल रहा है, prosecution तो छोड़ दो, scrutiny assessment, तो in that case whether this can be exercised, nahi. Okay, and if before filing of return under section on the basis of information in this provision PMLA, black money act, बेनामी, तभी भी नहीं कर सकते। तो आपको अगर पैसा ज्यादा भरना है गवर्नमेंट को तो अपडेटेड रिटर्न से आप भर दो, so you will be saved of any prosecution in future. Why I use the word prosecution? Because if you see this particular updated of filing return, it is with a cost. Up to 31st December of the relevant financial year करोगे, not applicable, मतलब आपको
उसके ऊपर कुछ ये नहीं आएगा। मतलब अभी मार्च 22 चल रहा है, 22-23 का आपका असेसमेंट ईयर, 31 दिसंबर तक करोगे तो आपको कुछ भी टैक्स नहीं आएगा। उसके बाद अगर 12 महीने में करोगे तो आपको 25% ऑफ द टैक्स वो एडिशनल भरना है, प्लस इंटरेस्ट। मतलब मेरा 5 लाख का टैक्स, 5 लाख का इनकम डिक्लेयर कर रहा हूँ, 30% से 1.5 लाख हो गया, इंटरेस्ट पकड़ के चलो 20,000 हो गया या 50,000 हो गया, तो 2 लाख पे 25%, दैट इज एडिशनल। And 12 to 24 months, it is 50%. So this is coming with a cost. But whoever wants to have a peace of mind, they can always exercise this. But this is, mind you, this is with this particular additional taxes. Okay. The example भी दिया है. If updated return is 15 February 23, देखो यहाँ 4,75,000. That's it. We'll go to the next one. Yeah, we'll take, after this session, we'll take the income tax questions, if any. To provide tax relief, COVID-19 के tax relief, simple provision है, but this is with a compassionate ground. There are whoever dies in the COVID or spend some money. Government, what they are introduced is employer, employee, fully exempt. अगर employer, employee को कुछ देता है, if paid on the death of the company, medical treatment में देता है तो भी fully exempt हो जाएगा. अगर कोई डोनर दे रहा है रेसिपिएंट को, तो that is exempt up to rupees 10 lakhs if paid upon the death of. Okay. So this is the provision. You'll get the a copy of this, or maybe we may have a detailed analysis or detailed note on this, and we'll circulate on your email ID. Okay. So next, now proposed amendment in the ये just a fun fact. क्यों fun fact बोल रहा हूँ इसमें कि क्या होता था कि आप मालूम है आपको 4% का सरचार्ज लगता है सैलरीड बिजनेस. हाँ, पहला एडिशनल सरचार्ज लगता है, मतलब 30% टैक्स है तो उसके 10%, 33% और उसके ऊपर 4%. तो some business entities they have claimed cess and surcharge as a deduction under, मतलब अगर मेरा 5 लाख टैक्स भरा है उसमें से सेस 50,000 है तो उन्होंने क्लेम किया था पहले, और courts and ITATs or judgments were there in the favor of the taxpayer. Okay. Government को पता चला कि this is not correct intent of the government. Everywhere what they are saying, when they are courts ने order दे दिए, high court में, tribunal में, I'm not going where it is because it will take too much of time. So in that scenario, now they are saying cess and surcharge cannot be claimed as deduction under PGBP, profits and gains of business or profession. Why they are saying so? Because and this particular amendment in the right hand corner applicable from retrospective 1/4/2005. Now retrospective amendments always under the subjected to the scanner by high courts, but time to tell. But in this case, now these business entities, what they will do, where the court judgments are in their favor, but now as per the act, they cannot claim. Next, we'll move ahead. Extract of proposed amendment. ये क्या है? This is very interesting again. अभी आपको मालूम रहेगा कि whenever these pharma companies, I have a big slide, prepared a big slide on this, but then I have curtailed. But just to for the knowledge of all participants, pharma companies used to give gifts, arrange some seminars, vacation holidays in the medical profession. And those pharma companies were claiming these gifts as a deduction under 37(1). But MCI, Medical Council of India, they have put this as an unethical practice. So 37(1) is introduced with a specific slide कि जो भी unethical है, that cannot be claimed as whatever it is not lawful under the law, under Indian law or foreign law. और foreign law में कभी आपको पेनल्टी आ गई कौन सी? आप बिजनेस कर रहे हो,
तो भी आपको वो आप यहाँ क्लेम नहीं करते बिजनेस एक्सपेंडिचर. So that is the reason they have, but this is applicable from if by 22-23. दूसरा फेसलेस. आपने फेसलेस हियरिंग, फेसलेस स्कीम देखा है. Somewhere in the last year they are started with faceless assessment, faceless appeals, then now tribunal is also going not faceless but online. ये फेसलेस में क्या हो रहा था कि professional used to submit, or client used to submit all the documents, and without giving the personal hearing, many orders have been passed, and those were challenged, and relief was given to the assessees in the higher court. So this is a pro assessee amendment. The income shall allow personal hearing through video conferencing or video telephony if assessee demands. So that is made mandatory. I'm not going into the nitty-gritty कहाँ section क्या आया है for the just because of the time constraint. Now ये कौन सा है? ये 14A वाला है. Yes. अभी 14A का just for the understanding क्या होता है कि मेरा taxable income है, कि पकड़ के चलो मेरा taxable income है 5 लाख और मेरा एग्रीकल्चर इनकम है 1 लाख, या कुछ पीपीएफ इंटरेस्ट है, वो एग्जेम्प्ट इनकम हो गया. Government was saying that if you are incurring some expenditure, then as per rule 6 under rule 6A 6D, yes, under that rule 80D of IT rules, they were saying that it cannot be claimed. But many again in judgments, many judgments, it is questioned, and the assessee was given relief, and that is the reason again they have brought this amendment कि आपको exempt income हो या ना हो. मतलब क्या हुआ था कि मेरा पूरा के पूरा taxable income है, मेरा exempt income नहीं है, तो मेरा आप disallowance मत करो. But still they were disallowing the things. That is the reason they have bring this particular amendment where disallowance of expenditure to be made even if no exempt income is there. Okay. We'll move on to the next slide. ये टेक्निकल नहीं है लेकिन आपको मालूम है 8 लाख करोड़ around 8 lakh crore people are filing. This is number of assessees. Assessees number of assessees filing the returns have increased. Why they have increased? Because government is taking action. अगर आपको TDS ambit में ला रहे हैं, AIS में ला रहे हैं. Now, as far as higher rate of this is concerned, 2 assessment years. Earlier, what they have said कि मैंने 2 assessment year तक return नहीं फाइल किया, तो क्या होगा? मैं आपको सर्विस दे रहा हूं, तो आप मेरा TDS डिडक्ट करते वक्त हायर रेट से करो. तो ये 2 assessment years they have brought it down to 1 assessment. Next, miscellaneous amendments है, but ये amendment मुझे ज्यादा important लग रही है. Unexplained and undisclosed income. This is all for business and salary also. Unexplained and undisclosed income shall be taxed. अभी इन्होंने एक इसमें undisclosed, if the source of funds is not explained by the person giving loan or borrowing, then the said sum shall be treated as unexplained in the hands of creditor. Okay. मैंने किसी से लोन लिया, मैंने डिटेल्स दे दिए डिपार्टमेंट को, तो सफिशिएंट हो जाता है. अगर उसका सोर्स आइडेंटिफाई नहीं होगा तो भी दैट विल नॉट बी ट्रीटेड एज explained, properly explained. Okay, so that is very important provision. Okay, see state government deduction of NPS, conversion of outstanding. This is just a threshold limit for state government employees. Contribution to NPS is increased to 14%. We have to rush through the next slides. This is major amendments of LTCG, that is for 25 to 37% long-term gain for more than. This is HNI के लिए है ना, इनका बहुत हो जाता है, तो वो 15% में वो restrict कर दिया 23-24. Okay, I'll just rushing to the next slide. Change in surcharge rate. Yeah, surcharge rate 12% to 7%. Okay. Yeah,
This is cooperative societies again. The surcharge rate on cooperative society they have bring down to the from 12% to 7%. Reason being corporate का भी यही था, तो cooperative society को by a step motherly treatment. So that is the reason that is revised. Okay. Similarly, जो alternate minimum tax है वो भी 18.5% से 15 slab rates. Okay. Thank you.